Hello everyone, I am Harkamal Kaur. Now in our today's class we are going to discuss question number 1 of exercise 10D of the modern solution of mathematics class 12th. तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास. If A vector, B vector, C vector and D vector respectively are the position vector representing vertices A, B, C, D of parallelogram, then write D vector in terms of A vector, B vector and C vector. Here it is. Firstly हम ड्रॉ कर लेंगे पैरेललोग्राम. Here it is, and parallelogram is ABCD, A, B, C and D, and A vector representing position vector A vector, and B represent the position vector B vector, and this one is C vector, and this one is a D vector. Okay, as we know that कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल जो है वो AC एंड मिड पॉइंट ऑफ बी डी आर इक्वल. ओके, सो फर्स्टली हम ऐसे राइट करेंगे एज ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, देयरफॉर द मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ here it is BD. As we know that mid point हम कैसे निकाल सकते हैं AC. Here is a position vector is A vector plus add this one C vector divided by 2 is equals midpoint of BD. This one is equals to this one. Okay, and how to find the midpoint of BD? Add B vector plus D vector. B vector plus D vector divided by 2. Here 2 cancel. We get A vector plus C vector is equal to B vector plus D vector. From here we can easily find, हम फाइंड कर सकते हैं D vector को A vector, B vector और C vector की टर्म में. Here it is. D vector को एक साइड रख लिया, बाकी सारे उधर ले गए. हमारे पास क्या आ जाएगा A vector plus C vector minus B vector. This is the solution. So if you like a video, kindly subscribe our channel. Thank you so much.